Alright, so hi everyone. I think we are live. Let me check it once. Okay, so it will refresh. Let's see. Okay. So yeah, I think we are now live. So the main purpose of this stream is to basically master dynamic programming problems. So I've recently started solving DP problems. Now, what I'm gonna do is I'll take approx 3 problems or maybe 2, and we're going to solve in approx or 2 hours and 2.5 hours. So plan is like I'll going to stream for next 21 days, and let's see if I can master in next 21 days TP or not. Okay, so this is the plan, and I have selected few problems for today, which was related to, like, basically these are the 4 problems, out of which one I have solved already, and 3 are based on the same pattern as I have solved with this one. So yeah, let's start with the stream. And this was the problem I have recently solved, and you can see here I got memory limit exceed on last test case, and then after yeah, so yeah, I was getting memory limit exceed on like 5 submissions, and after that much time finally I was able to get accepted verdict, and that is when I have converted that memoized version to tabulation. Sorry, this one tabulation. So finally I got accepted verdict. So yeah, now let's start with the stream. Okay, so we have, these are the 3 problems for today. So let me remove it first of all, and yeah, and this is the target. Basically what we are going to do is to master DP, my plan is to solve all the pattern based problems. So I found around 10-11 pattern based problems list, and daily we will try to solve few problems from it. So yeah, that's all. Let me first see if everything's working fine or not. So yeah, I think everything is absolutely fine. How was the sound? So okay, so I'm gonna do what, I'm gonna refresh it once and see. So yeah, I think it's working absolutely perfect. Okay, it's not showing here still, but just leave it. Okay, so now let's move to the very first problem. Okay, so I'm gonna start with the this one problem. Okay, so let's read the problem statement first of all, and I'm not sure how many I'll be able to solve on the first day, but let's give our best. I'm planning to do for approximately 2.5 hours this stream, and let's see if we could achieve that task or not. Okay, so the first question is number of dice rolls with targets up. Okay, so we have given n dice, and each dice has how many faces? K faces. Okay, that are numbered from 1 to k, a simple 6 dice we can achieve. Okay, we have given 10 integers, that is first is we have given n, we have given k, and we have given target. So these are the 3 things we have given. We need to return the number of possible ways out of k raised to n total ways to roll the dice. So the answer of the sum of the face up numbers equal to target. Okay, to roll the dice, so the sum of the face up numbers equals to target. Okay, so this is the answer maybe to the we need to return modulo. Okay, so I think problem is saying we have given our dice which has k phases. Okay, so I got the physical significance that what k signifies. K as let's say for first case, so in the first case, since k is equal to 6, and we have 6 faces, means we have a dice which contains 6 faces, and number from 1 to 6 is written on each face. Okay, I have no problem with this. And we have a target, which target sum we can say, which is 3. Okay, we have given target and we have given k. Okay,
Now our target is to return the sum. Uh, then return the number of possible ways, यानी कि we need to create number of possible ways to roll the dice, कि हम किस तरह से dice को roll करें so that we can achieve the sum of the face upside, यानी कि dice having up phase and the sum is equal to a target. So by how many ways I should roll the dice, basically the problem is this. So if you can see here in the explanation, we have target to achieve what, 3, and we have given k is equal to what, 6. All right, so means our array is what, 1 2 3 4 5 and 6, and our target sum is what, 3. Now you throw one die and with 6 faces there is only one way to get a sum of 3. तो sum of 3 को get करने का we have only one way according to it. Okay, I'm not getting this. Why only one way? Because we can achieve 3 by facing up like 1 2, then 3, and then 1 1 1. So aren't this is 3 ways? Maybe I have misunderstood something, but let's see. So return the number of possible ways out of k raised to n total ways to roll the dice. So the sum of the face up numbers equal to target. Okay, you throw one die with 6 faces. There is only one way to get a sum of 3. 3 sum nikalne ke we are having how many ways? Only one way. I don't know how, but let's see. And understand the second case. Here we have what, n is equal to 2 and k is equal to 6 and target is equal to what, 7. So what n signifies here? What does the n? Acha, total number of ways are what, k raised to power n, यानी कि 6 raised to power n, यानी कि we have total how many ways, 6 ways. अब total number of ways I have 6 for the first case, यानी कि we can roll the dice for the 6 times. So the sum of the face up number equals target, यानी कि there is no number of possible ways out of case in total to roll the dice. So the sum of the faces. अच्छा, okay. And here as you can see here, since k is what, k is equal to 6, यानी कि again we have a die with 6 faces and 1 2 3 4 5 and 6. Okay, target sum is what, target sum is 7, and we have what, n is equal to, यानी कि k raised to power n, right, k raised to power n यानी कि 6 raised to power 2, यानी कि we have total 30 ways. Okay, so we have 36 ways to roll the dice. 6 raised to power 2 यानी कि we have 36 ways to roll the dice. अच्छा, I think I got this. 6 ways मतलब we can roll, like we can achieve 1 2 3 single times. 36 ways मतलब I can get a number twice, basically. Something like we can achieve 1 2 3 4 5 and 6, यानी कि I can get twice. मतलब I can have like 2 characters in this case. ठीक है, so 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, and you can know 1 and 6 is what, 7. Then 2 3 2 4 2 5 2 6 and 2 5 is what, 7. So we got 2 till now. Then 3 and 4 means 3. Then 4 and 3 it's repeated, but I'm not sure कि we should count. ठीक है. Then we have 5 and 2, and then we have 6 and 1. ठीक है, all right, so I got this. Now here as you can see here, 30 and 30 means we have total number of ways to roll the dice is 30 raised to power 30. Basically I can sum up basically 30 times. I can have a single frequency of character, how many times, 30 times. Okay, so somehow I got the problem simulated. What exactly the problem wants from us, I think I got this. So to solve this, what I'm gonna do is, first of all I'm gonna have int f, and I'm gonna pass a index I that will go from 1 to 1 till k, right? We can have like k minus 1 and so on as well. Let's try with this.
ठीक है, to handle k thing we are going to do this. The second we have a target. Now we are going to keep subtracting on the target, but there is one problem. Acha, so we have a low constraint, so I think it won't cause any issues. And the third was what? Third thing was int n. So I have these three things. Okay, so what is my next plan to do is, what I'm gonna do is, alright, so we have int k. So what I can do is, I can simply iterate for int I equal to maybe 0 say, not 0, it's from 1 to k and I plus plus. I can do this, right? If I'm iterating through 30 characters, अब now n is 30 यानी कि first of all there are two possibilities कि I'm going to pick up the particular face or not. Okay, so let's say if I'm not picking that particular face, so what possibilities are gonna happen? If I'm not picking that particular face, means I'm not gonna subtract anything from the target. All right, I'm not gonna subtract anything from the n. Let's say this, ठीक है? Yeah, I'm not picking anything, so I'm not even subtracting anything from n minus 1. I think I need to do this instead. In my opinion, it should be like this. Okay, या फिर what I need to do is int not pick. Okay, f n, and then it should be what, k minus I, and then I'm gonna call what, I'm gonna call target. Okay, if I'm gonna pick anything, so what I'm gonna do is, first of all I'm gonna subtract my target minus what, target minus I think. Yes, then I'm gonna do n minus 1 because I have picked one character as well. Then I'm gonna do what, here I'm gonna do what, k minus 1 maybe. How k will change, will it be just I or something? I'm not understanding this thing only, like how to handle k. I understand ki how to handle n in target when I'm not picking any face up, so I'm not gonna subtract any n from it. Okay, all right, then I'm not gonna pick target as well, subtracting from anything from target as well. When I'm gonna picking up, then I'm gonna subtract one n, and then target as well, like I'm gonna subtract that k from that target. Okay, suppose I have picked one, so I'm gonna subtract it. Okay, I got this. Now how the value of k will change, or it won't? I have this confusion. Do I need to change the value of k or not? Let's see from the starting. Alright, so yeah. Okay. So the problem is how I'm gonna change the value of I, yani ki k. I'm iterating to k all through now. So do I really need? Let's say I'm gonna just pass I here. Okay. Let's see how the value of k will change according to problem. So we have a total of k number of waves. So yeah, I'm iterating through k only na यहाँ पे तो where I'm. So let's do one thing. When I need to uh, get out from the loop. So see, as soon as my n become lesser than 0, I strictly need to return from that. Okay, या फिर my target become lesser than 0, I strictly need to return.
if my target become equal to 0, I need to return what? I need to return 1. That's it. If my n is lesser than 0, yeah, if my target less than, I need to return 0. So this is the base case. Now, what I'm gonna do is I'm iterating through whole key. Alright. I'm doing key for if I'm picking anything. So what I'm gonna do is fn minus 1, yani ki I'm picking to n minus 1, okay. Then the value of key that I have picked, I'm passing this value as well. And then I'm passing target minus 1 as well. So yeah, since it is repeatable thing, right? So when I am picking, so I need to pass the value of k as it is, right? The key I can go again there as well. But when we have not pick wala case, yani ki when I'm not gonna pick that particular character, say we have 1 2 3 4 5 6, I have choice ki I wanna pick one or not. 4 5 6, I have choice for one ki if I wanna pick or not. If I'm gonna pick, I'm gonna subtract it from n, I'm gonna subtract it from target, and yeah. But if I'm not gonna pick it, what I'm gonna do is I will simply move to the next index. Okay, so wait, I'm removing this loop. Instead, I wanna pass the thing like this. K I'm passing, ठीक है. Okay, so we have how many ways? ठीक है 6, ठीक है, okay. Then I am passing what? यहाँ पे what I will do is I will do k plus 1. ठीक है. Now as या फिर मेरा k क्या हो जाए कि मेरा लेसर देन 0 हो जाए ये भी. तो मैं यहाँ पे k ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं k माइनस 1 कर देता हूँ. ठीक है, ये 3 कंडीशंस मैं ले लेता हूँ. एंड लेट मी डू वन थिंग, रिटर्न max of pick or not pick. So in my opinion this should be the function, and I'm gonna return the value of n, k and target, and let's try to run and find the problem in the recursive approach. Alright, so we got few problems. So this was error. Alright, so we have few problems here as well. That what I'm doing is target minus I, not this. I need to target minus k. So I think I'm gonna get the TLE right. I was expecting the same. So for some time I'm gonna remove this case, because until I'm not gonna memorize it, so there is no need of it. Alright, so we got for one case right answer, and for one case we got wrong answer. So why I'm getting wrong answer here? We need to strictly check this up. Okay, so we got this correctly. Alright, ठीक है. Means target is equal to 0, then we need to return 1. Okay, if my n went lesser than 0, then target. Alright. So there is problem in the function. Okay, like we got 1 1. If I do add, वैसे ideally मतलब I should not add here anything, because I'll count only when my target is 0, not every time I found a character. No, it should not be correct at any cost. Yes, because as you can see in the second case, what is happening, right? Why I'm getting the output as 3.
like when my target is what lesser than, like है ना, yeah, my target is 3, my value of k is what, 6. Okay, so what I'm gonna do is my value of n is 1. Okay, ठीक है. So if I'm not gonna pick 1, first of all I have 6, right? I have here the value of k is as 6. Let me try with uh, recursive table. Let me first try to create. Okay, so we have function call as n is 1, k is 6 and target is 3. So यहाँ से if I'm gonna pick that character, यानी कि if I'm going to pick that particular value of k, so what it will gonna give me, it will gonna give me -3, which I obviously I don't want, right? So first of all what I can do is I need to pass here not k, I need to pass here minimum of k and target, right? Because see, if my k is minimum than target, then ठीक है, if k is greater than target, then there is no sense of calculating for that values, isn't it? So I have passed 133 now. Okay, now we have target is 3 and n is 1. So what I can do, I have picked and it will become 0 and target becomes 0. Okay, so yeah, so it goes like that. So I got here what, I got here 1, isn't it? ठीक है. Now if we have what, 2, so what I'm gonna do is I'm gonna target -1. Like if I'm picking it, so what I'm gonna do is I'm gonna do not this as 1 plus, ठीक है. I'm gonna do is I'm gonna making it 0. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि what I'm gonna do is, let's say, मतलब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस हिसाब से, ठीक है. Let's try in this case, not that one. इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐड अप नहीं करता है चीज़ों को. ये ऐड अप कैसे नहीं कर रहा है, मतलब मैंने के पास करा 6, मेरा सम है 7 एंड मेरे को अचीव करना है 2 डिजिट में, ठीक है. एन का मतलब आई नीड टू अचीव इन 2 डिजिट ओनली. के का मतलब जो मेरा वैल्यूज़ है, मतलब ये इट इज़ लाइक वही अपना नॉर्मल टारगेट सम प्रॉब्लम. देन आई डोंट नो व्हाई आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस. इट्स लाइक सिंपली लाइक टारगेट सम ना. Okay, so one thing I need to return total number of ways, not this. So I need to do what? I need to have a speak plus not pick, not max. I mean, so this was one mistake I was trying. So yeah, I got 2 and I got 7. Alright, so there is still one mistake. Let me have over another cases. Let's say we have 3, let's say we have again 6, and let's say we have target sum as 10. So if I try running this up, and let's see what I can get. So yeah, I'm getting 16 per 27. Okay, so there is some issue in the recursive only. So there is some issue if target becomes 0, ठीक है. I don't know why I'm getting 2 here. Let me first figure it out. Okay, so since we have n is equal to what, 1, so I can have only 1 digit का character, ठीक है. So if I'm not picking it, if as soon as I reaches n is equal to 0, अच्छा okay, it doesn't define कि n 0 हो या no, it doesn't matter I think, ठीक है. As soon as I got a target is equal to 0, it satisfies the condition and should be given my answer, right? So my target is currently 3.
and I am having k is equal to 3 firstly. ठीक है, so I'm gonna subtract it, I'm going to get 0, and it is my first way to get 3 sum. Okay, when my value of k is what, value of k is like 2. Okay, hmm. Now okay, now the value of k is changed to what, to, अच्छा नहीं, wait, I haven't changed it for this case. ठीक है, then I'll go on not pick वाला case, जहाँ पे मेरी n की value is what, 1 still, target is same, and I'm gonna subtract 1 from not pick value. Now my next function becomes what, f1 2 and 3. ठीक है, so अब इस not pick के case में I have two possibilities. Either I'm gonna pick, if I'm gonna pick, so n becomes 0 and 2 will become 1. Now 2 will remains 2 and 3 will become what, 3 minus 2, that is 1. So this is function, if I'm not gonna pick this up, so the recursive will be like 1 and 2 will subtract to like 1, and then target remains the same. ठीक है, I got this function. Again for the next way I have two possibilities, I'm gonna pick or not pick. Okay, so if I'm gonna pick, so uh, automatically my n is going to what, lesser than 0, right, which I need to discard. Okay, so which automatically I need to do what, I need to discard, so it will return 0. Okay, if I'm not picking anything here again, so it will become what, f011. ठीक है, I have no problem with this. Then it will discard, and if I'm not gonna, then it will become f001. Okay, again if I'm not gonna pick anything, so it will discard and it will become what, and this will as well discard. ठीक है, so the overall answer till like 0 to 1 is what, comes out to be 0 only. Now we have what, 1 2 and 3 के लिए, like we have 1 1 3, and for this tree I'm gonna get what, if I'm gonna pick, it will become what, f of 0, since we have 1 here now, so k will remains the 1 and it will become what, 2. Now I cannot pick it further, since my, I think the problem is just कि मेरा n minus 1 should not be lesser than 0. Pick equal to 0, I'm gonna do if this condition n minus 1 become lesser if my n minus 1 is greater than equal to 0, and then मेरा target minus k is what, greater than equal to 0, then only I'm gonna call this function. Same, now let's try. So there is something wrong happened, I think. Target minus k should be greater than equal to 0, and n minus 1 should be greater than equal to 0. Bro, butter mushroom. Okay, so there is some problem again. My target as it is 0, I'm gonna do this. ठीक है, I have no problem with this, and I'm gonna pick only when, अच्छा अच्छा अच्छा, okay, I missed this, I need to do na pick equal to this now. I missed the important part. So here I got one, and which is correct. ठीक है, let's move further and solve other two parts as well. So here I want target as 7. Alright, and I'm getting 3. Why 3? Let me figure it out. Okay, so here you can see we have 6 faces. Target sum is 7, like we can have 1 6, then we can have
2 and 5, then we can have 3 and 4, then we can have 4 and 3, and then we can have, basically it's showing half of it, right? Then we are having 5, 2 and 6 1, so मेरे हिसाब से इसमें तो it's showing half. Let's see how many here we can get. N is equal to 3, right? So since we can have 27, so for 27 I'll solve later on. First let's solve the second case. Okay. So aren't I considering the duplicates or not? I'm not getting this. Since my case okay, so k is 6 already here and target is what, 7. ठीक है, I'm passing 6 here and I'm passing target is 7 here. All right, then if I'm picking, यानी कि I need two characters now. So if I'm picking यानी कि 6 minus 7 minus 6 comes out to be 8, becomes 1, and then n minus 1, and k remains the same, and then k keeps on decreasing until it's reached. ठीक है, so 6 1 I found. Okay, I have no problem with this. ठीक है, I found 6 1. Then if I'm not picking 6, then I need to pick what? I need to pick 5. मतलब I'll reach the function call where k is my what, 5. Since my k is 5, I'll approach the same thing and it will come what, 5 and 2. ठीक है, then my k, अच्छा I got this. Problem is just कि like the value of k keeps on decreasing, and so yeah, it becomes problem with this. So I need to handle this case only, कि repeated वाला, basically order. Since here we have what, 6, मतलब I think there is problem. I understand what is the exactly problem. Now I just need to find the solution for this problem. How can I find the solution? No, the problem is just कि like I am considering 1 6, but 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 I am not considering 6 1. The problem is this. The problem is just this thing, okay? I think when I'm not picking, I'm doing k minus 1, है ना? Should I do k plus 1 as well? Okay, let's add it, and as my k become greater than target, I need to return 0, and let's see. Hmm. प्रॉब्लम तो है.
I don't know why this arrow. I'm having a concern that k plus 1 should not be greater than this. I'm having this thing as well, right? I'm just increasing the value of k by 1, that's it. I'm not doing anything else, right? I don't know that why it's giving me deadly something. Okay, let me remove this. अब मुझे ना थोड़ा cleverly I need to handle the case कि where we have like change the order basically, right? Order where I can change. Let's say I'm passing here something as m, ठीक है? It will same as n, ठीक है? Let me pass here m, ठीक है? Let me pass here m, ठीक है? प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे मैं ना लाइक क्या करूँ कि m माइनस n ऐड कर दूँ. जैसे n की वैल्यू 2 है, अब ज़ीरो बन चुकी है. ज़ीरो बन चुकी है यानी कि मैंने दो कैरेक्टर का यूज़ करा, तो मैं उनको रिवर्स भी कर ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट? अब n की वैल्यू 2 थी, मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर यूज़ करके बना लिया, तो वैल्यू मुझे एक है. लेट्स सी. So for the first case correct, but for the second and third case it's like provided the ultimately wrong answer, right? So I need to think the approach. So why it is 0, I need to think for this. Now let's try to run this. Why this much problem? I'm not understanding it. Okay, just a minute, let me have some water, then okay, so let me drink it. Okay. Now the problem is just but I need to solve this problem ki how I can manage the order wala problem. That's it. Let's say we have three characters, 1 2 3.
I can have it like 1 2 3 2 1 3 3 1 2, like too many's. Not just जैसे 3 है तो we can have 8 type है ना, like we have one तो only single type. If my n is equal to what, 2, so I can reverse, like we have 1 4 to 4 1 1 2 to 2 1. Let's say we have 3 character 1 2 3, then we can have 1 3 2 2 1 3 2 3 1 and 3 1 2 and 3 3, मतलब 8 times. तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, कंसर्न बस इतना ही सही है. जैसे अभी तो मैं कर रहा हूँ m माइनस एन कर रहा हूँ, राइट. m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है मेरी 2, ठीक है. फिर मेरी यहाँ पे n की वैल्यू चेंज होती जा रही है. व्हेन आई एम पिकिंग 1 and 6 है ना, उस टाइम पे मेरी n की वैल्यू 0 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले मैंने 6 माइनस करा तो मेरा n माइनस एन 1 हो गया. फिर मैंने 1 और माइनस करा तो टारगेट 0 हो गया, n की वैल्यू 0 हो गई. तो अब n की वैल्यू तेरी 0 है, m की वैल्यू तेरी 2 है, तो 2 माइनस 0 तो तेरा 2 रिटर्न करना चाहिए ना फंक्शन, है ना. बट नहीं, it's not returning like this. Okay, अब से 1 है तो मेरा 1 आ रहा है, 2 है तो मेरा 2 आ रहा है. अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना मेरा आंसर ईच कैरेक्टर. 1 है तो 1 आना चाहिए, 2 है तो 2 आना चाहिए, 1 2 2 1 इस टाइप से ऐड होते हुए. 3 है तो 8 आना चाहिए, 4 है तो कितना आना चाहिए, 4 टाइम्स 8 इज 32. नहीं 8 तो नहीं आएगा. ऐसे देख, 1 है, देन 2 3 4 2 4 3, मतलब 8 टाइम्स ये हो गया तेरा उसी 1 के साथ. फिर 2 के साथ 8 टाइम्स हो गया, फिर 3 के टाइम 8 टाइम्स हो गया, फिर 4 के साथ 8 टाइम्स हो गया. तो 4 8 साथ तो 32 ही होता है तेरा, 32 ही आना चाहिए. तो यहाँ पे तेरा क्या आएगा, 32. देन तेरा 5 है तो 32 5 आई थिंक. ओके तो आई थिंक इट्स लाइक 1 है तो तेरा 1 आ गया, ठीक है. 2 कैरेक्टर से 2 1 2. ये रीऑर्डरिंग का पैटर्न भी तो देखना पड़ेगा फिर मुझे इस चीज़ के लिए, कि ये रीऑर्डरिंग का पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है. अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिटर्न करके देखता हूँ. स्टिल यहाँ पे 0 ही आ रहा है. ये 0 क्यों आ रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा. It's time for the help. I think I need to look at the GPT and ask it what I am doing wrong. These are some targets that causes incorrect incorrect recursive है, ठीक है. As soon as मेरा n becomes 0 return target is equal to 0, या फिर
तो इट्स लाइक कि एन के टारगेट मैंने पास करा, इनका यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरा एन ज़ीरो है तो मेरा टारगेट ज़ीरो, तो मैं 180 कर दूँगा, वरना मैं ज़ीरो, तो ये भी अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। टारगेट में रेस ज़ीरो, तो ठीक है, मैं समझ गया, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फेस को मैंने वैसे कर लिया, हाँ दैट्स व्हाट आई हैव थॉट अर्लियर एज वेल। यहाँ पे क्या कर रहा है, जस्ट n-1 के टारगेट माइनस फेस एंड रिटर्न कर दे रहा है वेस को। तो इसका अप्रोच ये है कि जो मैं पहले अप्रोच सोच रहा था ना, इट डिड एग्जैक्टली सेम। तो अगर मैं इस अप्रोच को एक बार अप्लाई करने का ट्राई करूँ किसी, just don't overthink, you just need to do what, just iterate through all the possible values of key. First thing you need to do is, once you have iterated, now you need to do simple task. अच्छा एक सेकेंड, isn't it the problem I have been passing minimum of k and target, maybe. Yeah, I've done several changes here now. Okay, so this case was wrong. Okay, so let me pass here m minus n once. अच्छा, okay, I got the thing approached, okay. अब n इज इक्वल टू, मतलब इस केस के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या आ रहा है, तेरा आ रहा है यहाँ पे m माइनस n आ रहा है, राइट। मुझे इसको रिप्लेस करना है फॉर ईच ऑर्डर। जैसे मेरा अगर वन है तो वन आ रहा तो ठीक है, बट अगर मैं तीन कैरेक्टर यूज़ करें, यानी कि इसकी वैल्यू मेरी क्या आ रही है, तीन, यानी कि मैंने कितने कैरेक्टर यूज़ करे, मैंने तीन कैरेक्टर यूज़ करे, तब उस कैरेक्टर की ऑर्डरिंग कितनी हो सकती है। अब जैसे चार है, चार को मैं कितने पॉसिबल वेज से अरेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तीन कैरेक्टर, यानी कि तीन बॉक्सेस है मेरे पास, और मेरे पास तीन कैरेक्टर्स ही हैं, जैसे 1, 2 एंड 3, जैसे तीन कैरेक्टर्स हैं। मुझे इन तीन कैरेक्टर्स को डालने के मैं किस ऑर्डर्स में डाल सकता हूँ, तो द पॉसिबल ऑर्डर्स कैन बी एज वन। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तीन, टोटल कितनी 27 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब से दो था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1, 2 डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 एंड 1 डाल सकता हूँ, मतलब नहीं ये नहीं ना, वेट, 2 एंड 1, तो 3, 2 एंड 1, यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज़ है फर्स्ट में। जैसे we have 1, 2, 3, then 1, 3, 2, then we have 2, 1, 3, 2, 3, 1, yeah we have 6 possibility, यानी कि वही अपना समय की वो है, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन है ना, फैक्टोरियल आई मीन। लेट्स से वी हैव 4, तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। लेट्स से वी हैव 5 पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पे मैं एक बार ना फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का ट्राई करता हूँ। लेट्स से वी हैव, आई एम सॉरी, int fact, I need to just pass the n here, and I need to return n multiply effect of n minus 1 as soon as मेरा n 1 के बराबर हो जाए, या फिर मेरा n इक्वल टू 0 हो जाए, I'll simply return what 1, and I'll
call the value of factorial. I'll call the function fact and pass this value. And now I will try to run this and see what result I can get. So for the first case I'm getting correct, for the second I'm getting, but the problem is still in the third case. Yeah, my n is 3, then my 6 I did to it is 10. Okay, so here I'm getting some wrong outputs. Maybe कि यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं जैसे भैया 2 to 4 are considered once not twice. Let's say we have 4 2 2, then we consider this is, let's say we have two sum as 10 है, right? 4 3 3. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 6 टाइम्स कंसिडर कर रहा हूँ ऐसा डिफरेंट, बट डिफरेंट यूनिट नहीं कंसिडर कर सकते हम इसको. But I cannot consider it as a different unit, right? मुझे इसमें फाइंड करना पड़ेगा यूनिक कितने कैरेक्टर्स हैं. Then it will become like a complicated thing. अगर मैं इस तरीके से गया तो, अगर मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से गया तो या it becomes a bit complicated. तो मैं उसके अप्रोच चाहता जो चैट जीपीटी ने डिस्कस करा हमने, for int I equal to 1, I lesser than equal to k and I plus plus. ठीक है, now I need to call the function that is f. As soon as I pick, I need to do -1, pick that or repeated allowed है, target minus what I, and then I need to pass, there is no need for m, I'm avoiding this. ठीक है, int answer equal to 0, I'm gonna do what, plus equal to answer. अच्छा, यहाँ पे ये केस सॉल्व हो जा रहा है मेरा, वो रिपीटेड वाला, जैसे मेरे की वैल्यू 1 है तब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 है तब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 3 है तब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 पे मैं कर रहा हूँ, 5 पे मैं कर रहा हूँ. तो यहाँ पे ये इश्यूज रिजॉल्व होगा शायद. I'll look if it resolves or not. Now see, as soon as my m reaches 0, I'll check what if my target is equal to 0. If it is 0, satisfied condition is return 1. ठीक है, else I need to return what, I need to return 0. If my target becomes lesser than 0, I need to return 0. देखो, मैंने जो पहले सोच रहा था, मैं जो अप्रोच, वो मैं यही सोच रहा था कि मैं इसके साथ जाऊँगा. ठीक है, अब इसके साथ जो हमें सारे पॉसिबल वेज मिल रहे हैं, मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड करके सोचा, बट इट गेट पास्ड इन लाइक दिस सिंपल अप्रोच. what I'm going to do, I'm approaching like all the values of k. ठीक है, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं पिक करता हूँ तो n की वैल्यू में 1 माइनस कर देता हूँ. ठीक है, टारगेट में से उस आई को माइनस कर देता हूँ, अब आंसर में ऐड करते सिंपल. ठीक है, अब एज सुन एज मेरा टारगेट जो है लेसर देन 0 गया, मैंने 0 रिटर्न कर दिया, वो अनसेटिस्फाइड कंडीशन है. अब मेरा एन जैसे मेरा 0, मैंने कि सारे वेज जो है ना मैंने यूज़ कर लिए, मतलब जितने मैक्स कैरेक्टर हो सकते थे मैंने सारे यूज़ कर लिए. तो मैं चेक करूँगा उस टाइम तक मैं टारगेट के वैल्यू 0 की, तो मैं 1 0. ठीक है,
there is no problem till now. Okay, now I need to do was I need to memorize it. मेमोराइज करने के लिए हमारे पास चेंजिंग पैरामीटर है यहाँ पे तीन, दैट इज एन की एंड टारगेट. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आई नीड टू बिल्ड अ 3D DP n+1, देन वी हैव अ 2D DP हियर int जिसका साइज होगा अपना k+1 एंड वेक्टर int जिसका साइज होगा अपना टारगेट +1 एंड आई नीड टू पास -1 into it. ठीक है, तो यहाँ तक अपना DP डिक्लेरेशन हो चुका है. I need to pass this DP array यहाँ पे. कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. I need to pass this DP here यहाँ पे, बस ठीक है. So DP array मैंने पास कर दिया है. अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन करनी है, दैट इज़ n, दूसरी वैल्यू अपनी k एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू अपनी टारगेट. ठीक है, मैंने असाइन कर दिया वैल्यूज़ को. अब मुझे एक फंक्शन लिखना है, मतलब एक स्टेटमेंट लिखनी है कि एज दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी कि आई हैव कैलकुलेटेड दैट वैल्यू आउट, राइट. I have pre-computed this out. Since I have pre-computed it, I'm not gonna recalculate it again. And yeah, so I think optimization is done correctly. Up now it's not still solved. I need to do one more thing. I need to check for one important thing. Just 1 second, let me put my laptop on, charging it once. It's not charging still. Okay, 1 second, let me bring my laptop's charger and then we will continue with the problem again. Just 1 minute. Hi, I am back once again with my laptop charger as well. Alright, so now let's figure out what next I need to do. It's giving me line 30 for me function. यहाँ पे ठीक है.
ओवरफ्लो हो रहा है, अंडरफ्लो हो रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम है। एनके टारगेट एंड डीपीएम रिटर्निंग। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, मैंने कर रखा है, ठीक करेक्ट है। I think I can avoid k here, isn't it? Because k is not a changing parameter in the function call, no? If I'm avoiding this, so I need to make it a 2D array. तो changing parameter मेरे क्या है, parameter n and target only. So I need to again remove this thing, have it this thing, have it like this, and it will what, single array, single vector. Then let's have it like this, let's have it like this. Basically remove this completely. Okay, so some syntactical error I think. Let me write it once again. Vector of vector int dp n plus 1 grow, and then again vector int what, target plus 1 and minus 1. Okay, so it's still giving me some errors. What's the issue? Yeah, I'm not understanding this. I'm just simply memoizing it, right? Okay, there is some other error, or identify, I need to identify. I think I've changed something. There is an error with the DP. DP array should be n and target. These are the only changing parameter, and I'm storing into the answer, and I'm returning it simply. That's the approach. है ना? यहाँ पे it's giving me some error for something else. चेंजिंग पैरामीटर है, टारगेट है लेसर देन 0 है तो रिटर्न 0 कर देगा. अब n की वैल्यू से हम 1 by 1 सब्ट्रैक्ट करना है. अच्छा, maybe I can do add it here n lesser than 0. Okay, so this was the issue only. Then why it has given me error when I was writing the very first thing. So as I applied dynamic, it gave me error. Okay. So if let's say k is also a changing parameter, just assume. तो यहाँ पे मेरा k हो जाता, बस यहाँ पे मेरा k हो जाता. फिर यहाँ पे मेरा changing parameter, let me comment it once. यहाँ पे मेरा 3D dp हो जाता. Vector int dp vector int
तो यहाँ पे मेरा क्या आता है, यहाँ पे मेरा n+1 आता, यहाँ पे मेरा क्या आता है, यहाँ पे मेरा आता k+1 वेक्टर इंट टारगेट +1 - 1, ठीक है। यहाँ तक हो चुका था, डीपी मैंने पास कर चुका हूँ ऑलरेडी इस फंक्शन में। तो यहाँ से इसको कॉपी कर ले, यहाँ पे इसको पास कर दे, या फिर डीपी की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम वैसे फंक्शन कॉल्स तो यूज़ ही नहीं कर रहा ना मैं कहीं से। मेरे हिसाब से बिन डायनेमिक क्यों हो जाएगा ना ये तो, या आई थिंक लेट्स ट्राई इट विदाउट डीपी। सिंपल सबमिट ट्राई करते हैं, टीएलई देगा तो विल फिगर इट आउट कि हाउ आई कैन ऑप्टिमाइज इट। अभी तो रॉन्ग आंसर आना चाहिए क्योंकि मॉड्यूलो नहीं अप्लाई करा मैंने। लेट मी डू हियर one thing. First let me add, so it's still giving me TLE only now. There is some concern with, let me ask GPT. Okay, so it's using 2D DP array, which I was thinking the same. So since it's using 2D DP array, so I'm gonna remove this, not this. I'm going to have this. Let me remove, not this, I need to remove this, and let's have it like this, and copy this TP array and pass this here, and have a one ampersand signature and then this. अब बस इतना कंसर्न है, कंसर्न क्या है, अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना है तो यहाँ पे मेरा 6 क्यों आ रहा है इंस्टेड ऑफ 27। प्रॉब्लम इज दिस, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। डिपेंड टारगेट इसने करा है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड वेज हो चुका है, n+1 करा इसने भी था, he did even same. What I am doing wrong. Your approach is almost your critical mistakes. पहला तो ये है no return state, अरे यार अच्छा अच्छा ओके, major mistake I have done is I haven't returned here. ठीक है, इनकरेक्ट मेमोराइजेशन चेक मतलब, अरे यार ओके, सो इतना सिंपल सा मिस्टेक कैसे, हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक, आई एम रिटर्निंग ज़ीरो, हाउ आई एम डूइंग दिस मिस्टेक्स। ओके चलो कोई नहीं, now I need to do just mod, let's say have here long mod कितना था 10007, ठीक है। let's have here hash define, I think यही होता है if I'm not wrong syntax। कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 3⁻9+7 है ना, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मॉड के वाले ठीक है। जस्ट डू वन थिंग, पास हेयर mod function, and if you want you can pass here mod as well in case
ठीक है। अब यहाँ पे आई एम डूइंग आंसर प्लस इक्वल टू ना, तो आई कैन डू व्हाट, to basically better optimization I can simply copy this, paste it here and remove this, and then as a whole mod if you wanna give, which will be like a bonus optimization, simply do one thing, mod, that's it. If it even goes any high, it won't affect any values. तो हैश डिफाइन मॉड में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये सिंटेक्स होता है या नहीं होता? आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट श्योर. अच्छा, I did one mistake here. Instead of capso I have passed 0. Alright, so now it's time for the test and submit. Finally I got accepted verdict. Okay, so let's finally, so yeah, hi everyone, we got the accepted verdict here, and it's been approximately 1 hour and 12 minutes attempting this problem, but no matters since we got the accepted. Now it's time for the one and another problem to solve. And yeah, I cannot deny that fact that wasn't able to solve this completely by myself. Okay. Obviously my approach was failing a lot of times. So next problem, what should I do? An ugly number 2. An ugly number is a positive integer whose prime factor are what? 2, 3 या 5 है. प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2 है या फिर 3 है या फिर 5 है. अच्छा ओके, हमें एक नंबर दे रखा है n and we need to return nth ugly number. ओके 10 है, तो n ugly number is a positive integer जिसका प्राइम फैक्टर होता है 2, 3 and 5. ओके, let's say we have n is equal to 2, 10, तो n ugly number पॉजिटिव इंटीजर जिसका प्राइम फैक्टर होता है लिमिट होता है 2, 3 and 5 के. Exploration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 is the sequence of the first 10 ugly numbers. मतलब समझा नहीं कुछ. One has no prime factor, therefore all of its prime factor are limited to 2, 3 and 5. मतलब वन का कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता, तो इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे क्या होंगे? लिमिटेड होंगे. किस पे? 2, 3 एंड 5 पे. मतलब अच्छा ओके, लेट्स टेक जस्ट 5 minutes ब्रेक एंड फिर एक बार आते हैं एक बार, क्योंकि एक एंड डिस्कस प्रॉब्लम को करके थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ है. लेट्स जस्ट टेक 5 minutes का टाइम आउट. Just 5 minutes, I'm sorry, but okay.
then after, yeah. So yeah, I was getting memory limit exceed on like five submissions, and after that much time, finally I was able to get accepted verdict, and that is when I have converted that memoized version to tabulation. Okay, okay, just 3 minutes more, and then we'll recontinue with this problem. So hi, I'm back. Okay, so let's begin with the problem again. The problem statement is, अच्छा, let me understand the statement first. ठीक है. Statement is like, we have given the an ugly number is a positive integer. An ugly number क्या होता है? एक positive integer है जिसका prime factor limited at 2,
3 या फिर 5 के। गिवन इन इंटीजर n, रिटर्न द nth अगली नंबर। ठीक है, मतलब मुझे 10वां अगली नंबर फाइंड करना है। अब जैसे 2 है, 2 का तो प्राइम फैक्टर 2 होता है, ठीक है। 3 का 3 भी होता है, 4 का 2 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, 7 का कोई नहीं होता ना। 10 का प्राइम फैक्टर 5 हो गया, 12 का प्राइम फैक्टर तेरा 3 इटसेल्फ, ठीक है। ठीक है, समझ गया। अब मुझे ये बताना है कि अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो है। सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स अगर मैं स्टोर कर लूँ, अब उन प्राइम फैक्टर्स को हटा के जितने भी नंबर्स हैं कैन बी पॉसिबली माय आंसर, राइट। तो स्टेप 1, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर निकालने का फॉर्म मतलब कैसे निकालते हैं, लेट्स ट्राई। वाइड प्राइम फैक्टर, जस्ट आई नीड टू पास एन इंटीजर n इंटू इट, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से आई लेसर देन इक्वल टू n तक, आई बेसिकली लेसर देन तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वाड कर सकता हूँ, सिंपल। एंड अब मुझे क्या करना है, जैसे प्राइम फैक्टर है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, इफ n मॉड्यूलो है इक्वल टू 0 है, यानी कि क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल है मतलब n अगर तेरा 1 से डिविजिबल है तो उसका प्राइम फैक्टर तो होगा वो, ठीक है। 2 से डिविजिबल है तो 2 मतलब, ठीक है। n मतलब अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फ्लैग इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। इंट फ्लैग इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसको 2 से पिक करते हैं। अब तेरा इफ फ्लैग इक्वल टू 1 है, फ्लैग इक्वल टू 1 है, यानी कि तेरा प्राइम फैक्टर होगा, कूल। यानी कि तेरा प्राइम फैक्टर होगा, वो नहीं होगा। एल्स तेरा प्राइम फैक्टर होगा, ट्रू होगा, यस। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँ, मतलब प्राइम फैक्टर में मैं अगर तेरा 5 पास करता हूँ, ठीक है। एंड आई आस्क कि हे, okay, I need to return an integer. Firstly, I'll return just 0 here. तो मतलब 5 तो तेरा क्या है, प्राइम फैक्टर है, तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। 5 तेरा 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो फ्लैग की वाली तो तेरी 0 ही है। 5 तेरा 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 तेरा 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या गड़बड़ हो गई। तो रिटर्न करना फॉल्स। 1 मतलब क्या, तेरा प्राइम फैक्टर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, आई मीन दिस। मतलब तेरा क्या है, एक तेरा मतलब मैंने 5 पास करा, ठीक है। जब बस प्रिंट तो करना ही पड़ेगा ना इसको। व्हाट द हेल आई एम डूइंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस ब्रो।
क्या गड़बड़ हो रही है? अच्छा, फंक्शन का नेम मैंने चेंज कर दिया। या इट्स गिविंग ट्रू, यानी कि प्राइम है मेरा। ठीक है, इफ़ आई पास 6 देयर आउट देन इट विल गिव मी कि इट्स नॉट अ प्राइम अगेन। अब एक अप्रोच तो है जो कि अनऑप्टिमाइज्ड है। लेट्स ट्राई दिस अप्रोच। अब मेरा n की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ पे जस्ट 1690, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं आइट्रेट कर सकता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 से आई लेसर देन 1690 तक, आई प्लस प्लस तक। ठीक है, अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना चेक करना है कितने प्राइम फैक्टर है इस नंबर के बीच में। मुझे बस 60-90 नंबर हैं जिनके पहले क्या प्राइम फैक्टर्स ना आते हों। अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, जैसे 3000 तक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं तेरा क्या करूँगा, प्राइम में मैंने आई पास करा, आंसर प्लस इक्वल टू मैंने कर दिया। इसको 0 रखते हैं, इसको इंट रखते हैं। अब प्राइम तेरा 1 होगा तो ठीक है, मेरे हिसाब से एक बार रन करने का ट्राई करते हैं कि 3000 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। यू विल फाइंड 3000 के बीच में तेरे 447 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मेरा आंसर कितना, जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है वो तेरा 1690 है, राइट। तो अगर मैं इसको 3200 भी कर दूँ तब भी 469, यानी कि मतलब हाँ ठीक है, इतना भी मैं अगर हर आइट्रेशन कर लूँ ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि वो कोई भी नंबर 235 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं एक फंक्शन लिख लूँगा, bool is possible, I'll pass n, ठीक है। इफ़ तेरा n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, या फिर n मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0 है, या फिर n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, कुछ एक भी सेटिस्फाइंग है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, वरना आई रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे यू विल चेक कि मेरा फो इंट आई इक्वल टू 2 से लेके आई लेसर देन इक्वल टू n प्लस प्लस नॉट। अच्छा, अब कंसर्न तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं एक प्री डिफाइंड वेक्टर बना सकता हूँ, लाइक वेक्टर इंट वेज, इसका साइज मैं 3000 रखूँगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी नंबर हैं जो कि तेरे 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है मैं वो पुश कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक वेक्टर वी लेता हूँ जो कि मेरा ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इफ इज पॉसिबल आई इक्वल टू ट्रू है, यानी कि तेरा 2, 3 और 5 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पुश कर दूँगा उसको, मैं पुश कर दूँगा यानी कि विदाउट पुश अंडरस्कोर बैक आई। चलो ठीक है,
अब मैं यहाँ पे तेरा डिबग करूँगा वी डॉट साइज। वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक 1 तो मैंने पहले से ही पुश कर दिया है, ठीक है। तो मुझे 60-90 तक ना, तो 2800 तक मेरे काम बन जाएगा आई थिंक। तो 60-90 तक ही एन पॉसिबल है, तो लेट्स मे बी 2500 तक काम बन जाए, और इवन लेसर भी। तो मेरा अप्रोच क्या है, मैंने सारे के सारे नंबर्स स्टोर कर लिए जो कि मेरा इस रेंज में पड़ते हैं। अप्रोच वही सिंपल सा है, मैंने सारे के सारे मुझे स्टोर कर लिया जो कि लिमिटेड 2 3 5, मतलब क्या है, ओके। अब मुझे रिटर्न करना है जो कि मेरा 12th नंबर पे हो या उस टाइप से ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देखूँ, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 12। मेरे हिसाब से सही है। ये तो टीएलई भी नहीं आना चाहिए आई थिंक। अब पता नहीं, इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैंने कहीं यूज़ तो नहीं करा, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट वाइज देखा जाए तो मैंने सारे कंस्ट्रेंट तो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हाँ, रॉन्ग आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, क्योंकि 11 जो है मैं 14 कंसिडर कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे क्या है 15 है, 14 क्यों नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, एन अगली नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर जिसका प्राइम फैक्टर है लिमिटेड टू, का मतलब क्या है। क्योंकि जैसे देखो, अच्छा उनके अलावा कुछ प्राइम फैक्टर हो ही ना हो, ओके समझ गया डीपी कहाँ यूज़ हो रहा है। तो मुझे फर्स्ट टास्क में ना मुझे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हर नंबर के। समझ गया। तो सबसे पहले मैं आता हूँ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने में, ठीक है। मैंने एन पास करा, मुझे यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या चीज़ होता है, नंबर उससे डिविजिबल हो, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं तेरा 2 से उस नंबर तक के कैरेक्टर्स क्या करूँगा, रन करूँगा, यानी कि इफ़ एन माइनस वन तेरा डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर इंट पी एफ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आई विल डू व्हाट, आई विल पी एफ डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, आई को क्या कर दूँगा, पुश कर दूँगा, ठीक है। एंड लास्ट में मैं रिटर्न कर दूँगा उस पी एफ को। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेक्टर वेक्टर फंक्शन बना लेता हूँ, वेक्टर इंट प्राइम फैक्टर। यहाँ से मैंने पी एफ को रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं फॉर टेस्टिंग पर्पस एक वेक्टर इंट टेम्प लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टर्स वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। प्राइम फैक्टर्स में मेरे को क्या पास करना है, जस्ट आई नीड टू पास द वैल्यू ऑफ एन।
लेट्स से मेरा n तेरा 6 है, तो मुझे प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ for int I equal to 0, I lesser than temp dot or not just temp dot size I plus plus see out temp of I। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे तेरा रन करने का ट्राई करता हूँ इसको एंड सी के what I can achieve, तो you can see here स्टैंड आउट मेरा 2 है। अच्छा मतलब मैंने 6 पास करा था, 6 का प्राइम फैक्टर तो मेरा 2 और 3 दोनों ही होगा ना। हाँ यार, यही कर लेता। अब जैसे 6 है तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 3 और 6 होगा। ये क्या है, सारे के सारे फैक्टर्स हैं, क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं? यानी कि कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टर्स जो होंगे ना। यार ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, फिर उन प्राइम फैक्टर्स में चेक करना है कि प्राइम फैक्टर्स 2 3 एंड 5 के अलावा और कुछ नंबर ना हो। ये तेरा सेटिस्फाई हो गया तो तुझे एक वेक्टर बनाना जिसमें तूने स्टोर करे हो सारे के सारे सेटिस्फाइड नंबर, फिर उस वेक्टर से तू रिटर्न कर सके। तो मतलब ये थोड़ा ओवर, मतलब ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा, समझ नहीं आ रहा मेरे को कैसे इसको अप्रोच करूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे कहीं। चलो एम हैप्पी की एक क्वेश्चन तो हुआ है, दैट तो मतलब थोड़ा सा। अच्छा, मेरे को ना एक प्रॉब्लम करना था, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। इस ड्राइवर की वीडियो पे देखा था बट मैं उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाया था, तो इसको सॉल्व कर लेते ताकि ना एक ही क्वेश्चन हो, फिर ठीक है आई थिंक। बाकी मैं देखता हूँ ये अगली नंबर 2 वाला ना, कल थोड़ा सा इसको इन डेप्थ पढ़ के ट्राई करूँगा एंड देन विल अपडेट कि if it's like I'll be able to solve this or not। तो मैंने ये ट्राई नहीं करा प्रॉब्लम, बट देखते हैं। तो मुझे अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, या फिर आई थिंक कैन वी डू फॉर टुमारो लाइक, बिकॉज या 140 आर किसमें आई एम अ बिट फीलिंग टायर्ड। ठीक है, हाँ तो फिर यही रखते हैं कि गेम काफ़ी पहले से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, बट फ्रॉम टमारो ट्राई करेंगे पूरा 2 hours तक रीच कर पाए। टुडे आई एम टर्मिनेटिंग इन 19 minutes अर्लियर। ठीक है, तो या
ट्राई करते हैं कल कि 2 आवर्स सब पूरा टच कर पाए। और कल मैं ये भी ट्राई करूँगा कि प्रॉब्लम्स जो है ना मैं पहले से ही अंडरस्टैंड कर लूँ कि प्रॉब्लम में पूछा क्या है, अप्रोचेस वगैरह, फिर यहाँ पे बैठ के आराम से बैठ के सॉल्व करें। तो ट्राई करें कि 2 घंटे के अंदर मिनिमम 2 प्रॉब्लम्स तो निकाल ही लें विद एक्सेप्टेड वर्डिक्ट। आज हमने एक निकाल लिया, एक में हम थोड़ा सा फंस रहे क्योंकि प्राइम फैक्टर्स वगैरह एंड ऑल सब कुछ पूछ रखा है। सो इट वाज फीलिंग अ बिट डिफ़िकल्ट, बट या, तो ये रखते हैं कल के लिए लाइव स्ट्रीम का टारगेट। आई आई विल सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स फॉर श्योर इन 2 hours. Okay, so by this I'm ending the stream. Thanks for joining.